gentlemen, तो आज का हमारा टॉपिक है Good afternoon, ladies and gentlemen. Myself, Dr. Shilpa Gandhi, and I'm a consultant thoracic surgeon working with KIMS-Kingsway Hospitals. जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है thoracic health demystified. What is it? It is nothing but to give you a short gist of a total clinical overview of total thoracic conditions which we can come across in our day-to-day practice. You know? So let's start with something which is very basic, is the intercostal chest drain. Intercostal chest drain, what is उसका टेक्निकल टर्म है ट्यूब थोरेकोस्टोमी. ये हम मोस्टली क्यों करते हैं जब हमारे चेस्ट में दाएं या बाएं तरफ कोई फ्लूइड जमा हो जाए, एयर जमा हो जाए, पस जमा हो जाए, ब्लड जमा हो जाए, कोई भी चीज़ अगर किसी कैविटी में जमा हो जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए एक रास्ता बनाना होता है. एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज जस्ट पुटिंग अ ट्यूब or putting a drain, right? This ideally is a most common procedure. It can be a life-saving procedure as well. Technically, it should be practically every doctor should be able to do this in any kind of situation, in any kind of setup, including even in emergencies. सो ये टेक्निक है. सो ये जो हमारा पिक्चर है ये बताता है लेफ्ट साइड में, दिस इज द एरिया विच वी आल्सो कॉल एज अ सेफ्टी ट्रायंगल और द सेफ स्पेस टू पुट इन अ चेस्ट ड्रेन. एंड अगर किसी को हम घर भेजना चाहते हैं, चेस्ट ड्रेन कुछ समय तक के अगर ये ट्यूब रहेगा या पाइप रहेगा आपके चेस्ट में, पर आप स्टिल मरीज को घर भेजना चाहते हैं, तो अनदर सेफर वे ऑफ डूइंग इट इज बाय अप्लाइंग अ हेमलिक वाल्व. Very simple. Let's come to another simple but very, very common occurrence or a common disease pattern in our day-to-day life. जो pulmonologists, chest physicians से लेके surgeons से लेके thoracic surgeons, ये in and out they come across to this, and that is pneumothorax. Pneumothorax, what is pneumothorax? It is nothing but chest में एयर फिल, जब चेस्ट में एयर फिल हो जाती है, एयर जमा हो जाती है, तो उसे हम नीमोथोरैक्स कहते हैं. जब उसका कम्युनिकेशन बाहर में बाहर के एटमॉस्फेयर से होता है, तो हम उसे ओपन नीमोथोरैक्स भी कहते हैं, मतलब कि उसमें देयर इज अ वुंड इन द चेस्ट एज वेल. इट इज़ अगेन वेरी कॉमन, यंग एज के पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, बहुत से समय ये COPD से एसोसिएटेड भी होता है. एंड कईयों बार ये ट्रॉमा, सिंपल एक्सीडेंट्स, रिफ्रैक्चर, पसलियाँ ब्रेक हो गई है ना, तो साथ में नीमोथोरैक्स हो गया. सो ट्रॉमा के साथ भी होता है. अगर ये सडनली डेवलप हो जाए तो उसे हम टेंशन नीमोथोरैक्स कहते हैं, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है. इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. एंड अगेन, जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि उसका मेन ट्रीटमेंट इज उसका फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज इन पुटिंग अ इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेन. जैसा हम जा रहे हैं, सो एवरी स्लाइड इज एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन, है ना. सो नीमोथोरैक्स, जैसे मैंने बताया था, trauma to the chest. The chest trauma can be a penetrating in the form of a knife injury or a stab injury or a sharp object injury, or it could be blunt because of very, very simple, most common cause, and that is a blunt trauma to the chest is road traffic accidents. दिन ब दिन रास्तों पर कारें बढ़ते जा रही है, रैश ड्राइविंग कम नहीं होती है, स्पीडिंग doesn't come. Speeding is also persistent. Hence, all these situations, they give rise to very much accident-prone events in our day-to-day life, and that can produce rib fractures, which can be associated with pneumothorax, flail chest, or accumulation of blood in the chest, which we also call as hemothorax. So this is the picture of ये मैं दूरबीन की होल सर्जरी यहाँ पर हमने की है फॉर हीमोथोरैक्स. हीमोथोरैक्स यानी कि जब चेस्ट में ब्लड जमा हो जाता है. मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, इज trauma, and trauma is mostly because of the road traffic accidents.
कमिंग टू अनदर, मतलब जो इंडिया में अगर आप रहोगे और अगर ट्यूबरक्लोसिस की आप बात या डिस्कस ना करें तो कोई भी प्रेजेंटेशन अधूरा है. मोस्ट कॉमन कंडीशन, most common and the biggest burden of tuberculosis is actually unfortunately इंडिया अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका, राइट. इसीलिए हमारे प्रैक्टिस में अगेन ट्यूबरक्लोसिस से जुड़ी हुई लॉन्ग टर्म डैमेजेस डे टू डे बेसिस पे आती है. व्हाट आर दे? मोस्ट कॉमन इज पस. जब पस कलेक्ट हो जाता है चेस्ट में, उसे हम एम्पाइमा कहते हैं. I think every second day we come across either a referral or a patient or a walk-in patient, or there is um, it is so common in any setup or in this country. So जब पस कलेक्ट हो जाता है तो जाती है. फॉर एग्जांपल जब उसकी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, सांस की दिक्कतें बढ़ जाती है, या उसे इसका फीवर जो है वो कम नहीं हो पाता, तब वो मरीज प्रेजेंट करता है यूजुअली सर्जिकल असेसमेंट के लिए. उसमें आई वुड से कि द very ideal approaches. Keyhole surgeries are very ideal for treating empymas. Later stages में, of course, you can also do decortication. जब डिजीज को 1 महीना या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप डिकॉर्टिकेशन भी कर सकते हैं. तो आप जैसे देख रहे हैं ये अलग अलग स्टेज के प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं इस पिक्चर में एम्पाइमा के. जो लेफ्ट हैंड साइड में है, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्कैन, ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज ऑफ एम्पाइमा है. इतना एडवांस्ड है कि आप अगर अच्छे से, आप अगर गौर से देखें तो जो राइट साइड का चेस्ट है वो पूरा सिकुड़ा हुआ दिखता है इस सीटी स्कैन में. बाकी उसके नीचे का जो इमेज है सीटी स्कैन का, इट इज़ अ वेरी अर्ली स्टेज, वेरी स्मॉल बट लॉक्यूलेटेड एम्पाइमा, वेरी आइडियल for keyhole and very quick recovery. और सिमिलरली राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अंदर में जालियाँ दिख रही है हमें, है ना. तो ये काफ़ी सेप्टेशंस नज़र आ रहे हैं स्कैन में, विच हम उसको कहते हैं मल्टी लॉक्यूलेटेड एम्पाइमा. इस तरह से ये जब हम की होल प्रोसीजर्स करते हैं तो आप देख रहे हैं तो इतनी गंदगी या इतना मवाद एंड डेंस थिक डेब्रीज ये हमें दिखते हैं व्हेन वी आर डूइंग दिस सर्जरी फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस. या another, yeah. सो निमोनिया, अब अगर हम ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन की बात करें और अगर निमोनिया की चर्चा ना करें तो अगेन आई सेड कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रूटीनली एनकाउंटर्ड इश्यूज स्पेशली इन द क्रिटिकल केयर सेटअप ऑफ द कंट्री. निमोनिया जब परसिस्टेंट यानी कि जब लंबे समय तक रह जाता है, नॉन रिजॉल्विंग है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है. नंबर वन आई वुड से इज द नेक्रोटाइजिंग निमोनिया. आप जैसे देख रहे हैं ये जो राइट साइड में ये जो स्कैन है, इसमें हम एक तरफ देख सकते हैं कि राइट साइड में लंग के कुछ हिस्से में अंदर में मवाद है जमा हुआ. इसको हम नेक्रोटाइजिंग निमोनिया भी कहते हैं. दूसरा एक प्रेजेंटेशन है कि एक बॉल या एक कैविटी बन चुका है लेफ्ट चेस्ट में और वहाँ पे फ्लूइड भी जमा हो चुका है एंड विद सम अमाउंट ऑफ एयर. So you can, this is called as air fluid level, and this disease or this presentation is called as lung abscess. से हम lung abscess. So these are again various presentations of persistent pneumonia or persistent infection in the chest. मगर again जैसे कि हमने कहा है ये localized है, मतलब एक particular हिस्से में है और ये भी ideal cases है ना.
थोरैकोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ठीक जिसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आइडियल सिचुएशंस एंड आइडियल केसेस है। मोस्टली इस तरह के मरीज हमें क्रिटिकल केयर सेटअप में और क्रिटिकल इंटेंसिविस्ट दे आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स प्रॉब्ली इन द आईसीयूज एंड they are on long-term antibiotics. There are some other other common presentations of tuberculosis. अब जैसे ये आप देख सकते हैं aspergilloma. इसे हम very this is a technical term, however a much more easier way of explaining is a fungal ball. So ये जब ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो भी जाए पर अपने कुछ अंश वो जब पीछे छोड़ जाता है तब वहाँ पे लंग डैमेज हो जाता है एंड उसमें थोड़ा सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फंगल बॉल। दूसरा और डिजीज विच इज अगेन वेरी वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन एंड दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ये यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेजिंग में कि दाईं तरफ का लंग ऑलमोस्ट मल्टीपल छोटे से छोटे बड़े से बड़े एयर कैविटीज है एंड ऐसे मरीज को यूजुअली टीबी का हिस्ट्री रहता है। सो दिस is again because of the long-term complications of tuberculosis. फिर आप यहाँ अगर देख सके तो दूरबीन द्वारा जांच हुई है मल्टीपल नोड्यूल्स अंदर दिख रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोस स्टेनोसिस। अगेन अंश है टीबी का ही लॉन्ग टर्म डैमेज। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो गांठें जो हमारी चेस्ट में सेंटर में बड़ी बड़ी गांठें होती है वो सारी एनलार्ज्ड हो चुकी हैं। इसे हम mediastinal lymphadenopathy भी कहते हैं। So again that is another presentation in all these situations either we can do हम इन्हें की होल द्वारा लंग सर्जरी से यानी उस तरफ का हिस्सा हम हम रिमूव कर सकते हैं। we can do a lobectomy, we can do a pneumonectomy or we can take the wedge or a segment of the lung. So हम पोर्शन ऑफ द लंग या एक लोब निकाल सकते हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली जब डिजीज बहुत एडवांस होती है तब हमें उस तरफ का एक लंग निकालना पड़ता है। बट लाइक आई सेड दीज आर ऑल क्लासिकल पेशेंट्स एंड दीज they need they need assessment and they need treatment. We can't manage these patients conservatively for a very long time. Tuberculosis ke baad, one of the most dreaded disease which I would like to discuss, or maybe just give an overview, and that is a lung cancer. Yes, lung cancer not always it presents in advanced stage. If we are we have to be vigilant to pick them in the early stages. What are the presentations? Lung cancer के presentations क्या है? X-ray में, yes, X-ray cannonball, a simple small ball-like shadow, जैसे ही अगर आपने suppose X-ray में आप उसे देखते हैं, so the first thing we need to do is get a scan of this patient. You never know, it can be TB. Well, of course it can be TB, but yes, not every shadow should be a TB. So lung cancer हमेशा हमारा एक close diagnosis या फिर close disease हमारे mind में हमेशा रहना चाहिए. And such a patient, when it comes to you, you have to get a scan done. Another is, you can say, nodule. So आप देख सकते हैं ये जो imaging है left hand side में at the top, again it's a very single nodule लेकिन बड़ा solid है and scattered and spiculated margin. So again this is very classical presentation of central lung cancer or a lung or a malignant nodule. जब इसमें थोड़ा कैविटेशन आ जाता है, एयर जमा हो जाती है, उसको हम कहते हैं कैविटेटिंग lung mass, which is again very very classical presentation of lung cancer. कभी कभी लंग कैंसर बहुत सॉलिड आइसोलेटेड एकदम राउंड बट आइडियली ऐसा मतलब एक सर्क्यूलर सॉलिड लीजन की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है एंड कभी कभी इट कैन बी ऑन इन बोथ द साइड्स ऑफ द लंग, है ना। पर उसे स्टिल इट नीड्स एन इवैल्यूएशन बाय अ thoracic surgeon. इसीलिए I would recommend that these people should always be screened by a surgeon before undergoing the definitive treatment. Again there are some another less common malignancies or less common cancerous lesions जैसे हम जिसको कहते हैं hamartoma. Again scan
hemangioma भी कहते हैं. Again, it has to come out. You can't treat it with medicines. You can't treat always with an embolization. Very, very, very. Like a less common presentation on the CT scan, but most commonly ignored is a ground glass opacity. ये स्कैन में बहुत अलग अलग तरह से इट कैन बी जस्ट कभी कभी एक नोड्यूल की तरह प्रेजेंट करता है, सॉलिड नोड्यूल की तरह, बट कभी कभी सिर्फ एक हल्का शैडो. लेकिन whatever it is, whenever you see it, it should never be ignored. इसीलिए जब आपको ऐसा कुछ इमेजिंग में shadowing दिखती है, again I would recommend that you consult your thoracic surgeon. So like I said, these are all the early stages and varied presentations of lung cancer. ये सारे early stages है, which means they are amenable for surgery. Ideally, I would say a keyhole surgery. I mean, of course, a keyhole surgery, I would say. तो ये जैसे मैंने कहा था कि आप या तो एक लोब निकाल सकते हैं या आप एक पूरा लंग निकालना पड़ सकता है, और जस्ट द कैंसर एंड उसके आसपास का जगह जिसको हम स्लीव कहते हैं, या फिर स्लीव लोबेक्टमी विद अ पार्शियल स्लीव ऑफ द वेसल, है ना. या आपको सिर्फ वो एक छोटा हिस्सा, एक छोटा पोर्शन ऑफ द लंग वो भी निकालना हो सकता है, जिसे हम बेड रिसेक्शन कहते हैं, और वी रिमूव something called a segmentectomy, which is a less than a lobe. All right, so ये है various types of surgical resections which we may need to do for a lung cancer, and not just for lung cancer. I would also say any disease occupying it's showing lung lesions. Thymus. So surgery for thymic conditions, again not uncommon. What is thymus? It's a gland. It's a gland starting from the root of the neck and just ending at the top of your heart. So this is your thymus gland, and very common. I think it's not uncommon to have a patient of myasthenia gravis. Which may or may not be associated with thymoma. Thymoma means myasthenia gravis, जहाँ पे muscle weakness ज़्यादा common होती है, आँखों की दिक्कतें थोड़ी common होती, I mean one of the presentation. लेकिन ऐसे मरीजों में ये जो presentation होते हैं because of the ये tissues जो थाइमिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होते हैं. पॉसिबल है कि ऐसे केसेस में थोड़ा थाइमोमा या थाइमिक नोड्यूल्स भी हो सकते हैं. सो व्हेनेवर यू हैव दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, और व्हेनेवर यू हैव proper thymic carcinoma, this kind of a presentation, or whenever shadowing is there in the thymic region, consult your thoracic surgeon. खाने की नली के esophageal disease और खाने की नली के दिक्कतें, so they can be in any form. Either it can be a cyst, right? It can be a cyst, esophageal cyst, or it can be a leiomyoma. Again, a very benign but very smooth looking, smooth appearing lesion. ये हमें मोस्टली ये एंडोस्कोपी द्वारा पिक होती है. So leiomyoma. All right. So these, again, whenever you find, it needs an assessment by a thoracic surgeon and treatment by a thoracic surgeon. Again, like I said, very common in our day-to-day practice is bullous lung disease. Bullous lung disease, what are they? Bulla means whenever an air pocket balloon is there, air-filled balloon in the chest is called as a bulla. Varied presentations, एक से लेके multiple हो सकते हैं, 1 centimeter से लेके, it can be also giant bulla. Giant bulla means this as giant as occupying the whole of the chest. All right, so this is again one of the giant bulla. This is a giant bulla. X-ray में ये इस तरह से दिखते हैं, in the form of just shadowing, a deep dark black shadow. Yeah, and when we do a CT scan, this is how they appear. This is a simple bulla. Then this is a typical bilateral upper lobe, the center one. So these are bilateral solitary upper lobe predominant bulla, and then this one is a heterogeneous bulla. So simple, it can be a simple
disease, or it can happen in the presentation of excuse me. So it can happen in association with COPD. COPD in the Indian scenario is very, again, very common. It can be a bit of a debilitating disease, and these are common complications, you can say, or complicating entities associated with to COPD. Cystic lung disease, again, not uncommon. Cysts matlab ki fluid filled, fluid filled like cavities in the chest. So they can be either hydatid cyst, very huge, very giant. So it's very, very classical presentation, typical presentation on the scan. This is the, the membranous appearance or the onion peel appearance because of the scoliosis. So CT scan may, it's very ideal to pick up hydatid cysts. And then we have very some simple cysts arising from the embryogenic elements of the tracheobronchial tree. इसको हम bronchogenic cyst कहते हैं. So when we come across these, again, these are very ideal cases, and they need surgical assessment and then the surgical excision by a thoracic surgeon. This can be done quite as, satisfyingly and smoothly by even by a keyhole approach, that is uniportal VATS. There are some less common occurrence, but needs much more awareness uh, for further investigation, and hence they are miscellaneous conditions like hyperhidrosis. What is hyperhidrosis? Hyperhidrosis is nothing but excessive sweating of some peculiar areas of the body or body parts. For thoracic surgeon, what is important is excessive sweating of the hands, excessive sweating of the forearms, excessive sweating of axilla, or excessive sweating of the face. These are the presentation is so classical. The patient's complaints is so classical that they just they are determinant to seek advice from the specialist. So again, these are very ideal cases for thoracic surgical consultation or evaluation. Thoracic endometriosis, very uncommon, लेकिन जब endometriosis होता है females में, in some of them during menses, some of these females, they start developing accumulating fluid in the chest also, or air in the chest also. 6% of these, they have a chance of having the same endometriotic the nodules or the lesions even in the chest. Thoracic endometriosis, so again, a very less common surgery, or less common disease, but very ideally treatable by a keyhole approach, so by VATS. Great. देन कुछ डायफ्राम, तो डायफ्रामिक मसल है जो चेस्ट को एब्डोमेन मतलब कि पेट से सेपरेट करती है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल टू हेल्प इन आवर ब्रीदिंग. जब ये डायफ्राम बहुत, when it is flimsy, when it is extremely loose, or when it is flimsy thin, when it is very thin, तब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन, तो ये नॉर्मल पोजीशन से हटकर ऊपर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इवेंट्रेशन. सो so these are not very common cases. So there can be a breach, or there can be a break in the continuity of diaphragm, जैसे कि hernia, जो कि hernia produce करेगा, or eventation. In both of this, so the symptom presentation are always the same. जो पेट की जो भी contents हैं, जैसे स्प्लीन है या फिर लिवर है, आंतड़ियाँ, सो ऑल दीज इंटेस्टिनल लूप्स, ये फिर चेस्ट कैविटी में चले जाते हैं, और इससे पेशेंट की सांस लेने की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं. So again, because the diaphragm is paralyzed or it's flimsy thin. So again, this is it's not a very common condition. It can be debilitating as well, but again, it needs an assessment and management by a specialist, specialist services in the form of a thoracic surgeon. Um,
Again, a bit of a rare condition as well, not very common, but yes, we do see in the Indian scenario, and that is tracheal stenosis. What is tracheal stenosis? एयरवे या विंड पाइप जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, जब वो सिकुड़ जाता है कुछ हिस्सों में, या एक या फिर एक हिस्से में इतना सिकुड़ जाता है कि सांस लेने की दिक्कत, जो रास्ता है वो पूरा संकरा हो जाता है, इससे सांस लेने की दिक्कत होती है, जिसे हम स्ट्राइड भी कहते हैं. Yes, when it happens, then these patients, they need meticulous management in with a multidisciplinary approach, right? So I think these cases are very ideal to be treated in a tertiary level or a tertiary care center, and these are very ideal cases where a thoracic surgeon should be very actively involved. Yeah, yeah. So I think this is just the gist of the common, or along with the uncommon occurrences of or conditions in our day-to-day practice. um, I would like to invite questions from the audience. Okay, yeah. अच्छा, so I think एक question पूछा है Mr. Ritesh, है ना? What is the most common respiratory condition? So I think I will label it, or I will answer it in two parts. The most common respiratory condition in our day-to-day practice is pneumonia. Well, pneumonia and respiratory failure, they go hand in hand. However, pneumonia and respiratory failure, but most common reason behind it, hmm, or the most common disease producing these two conditions, I would still say, is infection, again, in the form of tuberculosis, and as well as non-tubercular infections. So 40% or 40-45% of the infections are because of tuberculosis. The remaining happen because of some तो hospital acquired pneumonia अगर है तो, yeah, some notorious bacteria or bacterial infections. So yes. What are the common complications of the respiratory system? Yes, it is actually a very, very big. So the answer to this, it can be really very big. It requires another talk. However, most common complications where a surgeon should be involved, right? So most common complication where a thoracic surgeon should be involved, है ना? तो अगर मैं वैसे आपको जवाब दूँ तो जैसे मैंने कहा है, complications of the disease, complications of the in the form of COPD का complications, right? In the form of severe emphysema, COPD, end stage lung disease. So there, where the surgeon is involved in the form of requiring a lung transplant. Then tuberculosis ka complications. For example, fungal ball hai, bronchiectasis hai, where you need a thoracic surgeon to do a lobectomy, a keyhole. I mean, yeah, for surgical. तो वो सर्जरी के द्वारा उसको ठीक करने के लिए you need a surgeon. Then pneumonia है, persistent pneumonia है, ओके, कॉम्प्लिकेट हो जाए जब तो वो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया या लंग एब्सिस हो जाता है. So again, you need a surgeon, you need a thoracic surgeon. So I think these are some of the few common occurrences of, or common complications which we encounter in our day to day day to day practice. I think I've answered this question, but I think, yes, I will just recapitulate, and that is, what is the leading cause of problems with the respiratory system? So, leading cause of problems with the respiratory system. If you're asking me the disease, so I think the disease is infections, tuberculosis, but I would also add in our Indian scenario, because कि देखिए हमारे यहाँ कुछ risk factors जो है, they we were still unfortunate to take to control,
or to prevent, or to control, to take charge of the risk factors which we are exposed to, like smoking, right? So smoking, number one. Then pollution in every city, almost all the tier one or urban cities. Number two. And then we have, if you're going in the rural areas, तो जब हम rural areas में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे women are exposed to chalk, the chulha, the coal exposure, because of the chula, or the they're using in the kitchen for cooking, for daily cooking. So I think we have still not achieved appropriate protection and prevention against these risk factors. So I would still say, even if we have diseases, we are still not entitled to blame over the diseases. We have to take control of the risk factors. So I would say that these are our risk factors, and they have been notorious to give rise to a lot of chest diseases. um, yes. So, what are the first sign of lung problems, and how does COPD affect our daily life? So, देखिए lung जो है ना, it's a very, see, lung is a very it's an organ like a sponge. It's a very delicate organ. Anything, अगर कोई भी हमारे cavity, हम अगर chest cavity में अगर कुछ भी collect हो जाए, whether it is a pus, blood, air, you know, anything. The first thing it will do is it will occupy the space. If it occupies a space, the lung gets compressed, and hence आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए शुरू हो जाएगी. I would say the first sign that, that should indicate you have a lung problem is when there is a shortness of breath. COPD, जैसे मैंने कहा था, yes, COPD is very common, and most of the times is not appropriately connected as not appropriately treated as well. So COPD, it needs, it affects our day to day, it's straightforward, affects our day to day breathing, which directly has an impact of our quality of life. So it's straightforward, affects our quality of life. COPD जब ये appropriate treatment के बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं, then these patients long term में they also start requiring oxygen. So slowly from from being ambulatory, you reduce your performance score, and then you start getting like dependent to oxygen. You have frequent hospitalizations, and of course there is an impact on the financial issues or financial architecture of the patient as well. So COPD is, I would say that it needs really a specialist to treat, a specialist chest physician and a specialist chest surgeon, and it is a disease which should need our kind of, हमारा immediate attention, not immediate attention, but it deserves an attention by the patient, and not just by the patient, but also by the treating physician or the treating surgeon. So yes, it has a direct impact over our quality of life. Like I said, what conditions are treated with thoracic surgery? We have already actually discussed this in our presentation, and it's an exhaustive list. So the list is exhaustive. Uh, Majority of it, so diseases of the lungs, so फेफड़े के बहुत सारी diseases हैं, पसलियों की diseases है, then cords and nerves की diseases है, then diaphragm जो muscle है उसकी अगर कुछ diseases है, airway, wind pipe, food pipe, इसकी अगर कुछ diseases है. So all these, they are very easily treated by under thoracic surgery. Doctor, how can we test our lungs health at home? Yes, very common. So I think, no, you can not just only test it, but you can improve it as well. And वो आप कहीं भी कर सकते हैं. And most common way of doing it is just ballooning. तो हम जो balloons. So you keep ballooning. You do balloon. You breathe in air inside the balloon, and then you हम जितने balloons on a day you're able to
pump in, that will help you in improving your lung capacity. It's it's an objective way of kind of deep breathing as well. So apart from deep breathing exercises, so I think I would say ballooning. In this way, you can identify, you can understand how you can, if you're in able or unable to do it or not. Main cause. What is the main cause of emphysema? One person is asked. So, main cause of emphysema, I would say, is COPD. So, COPD and emphysema go hand in hand, and the risk factor behind it is mostly smoking, smoke, smoking, and yeah, smoking and pollution. I would say is the most important risk factor producing COPD as well as emphysema. Thank you so much. I think yes, I this is a very topic close to my heart. Somebody has requested talk to please take a session on COPD. I think that calls for another talk, probably next time, because I really this is another a very important topic, and it's a very debilitating disease, and a lot of knowledge sharing and awareness is required for COPD management. Yes, I think we have noted your request, है ना? हम बहुत जल्दी इसके ऊपर में एक और सेशन लाएंगे. So I think we've had a great discussion and a very elaborate presentation. Uh, so if we do not have any more questions, then I think yes, we should call it a day, है ना? And जैसा कि हमें request किया है कि yeah, better presentation in the on COPD, a detailed presentation on COPD. Thank you. Have a great day.